Hi everyone. Good morning, guys. I welcome you all to the YouTube channel of PRATHAM Test Prep. From today onwards, we are starting with the economic syllabus, the revision of economic syllabus for term 2, right? So for class 12th term 2, we are starting the syllabus, the economic revision syllabus, right, for term 2. Now, we know that term 2 paper is subjective in nature, so you need to have your concepts very clear. Okay, so we are specifically starting from the very start. We are taking into consideration the syllabus which has been released by the CBSE, right, the reduced syllabus, of course. And yes, so let's quickly start with the macroeconomics and its basic concepts. Now, before I get into this topic, let me make this thing very clear to you that for class 12, we come up live, we go live on YouTube on Pratham Test Prep's channel every Saturday at 10:30 a.m. Right? Every Saturday at 10:30 a.m. we go live on Pratham Test Prep's YouTube channel for discussing, for revising the economics concepts for class 12. But if you are a class 11 student and you have hit this video, if you have by chance, by mistake, you have clicked on the link of this video, and if you are a class 11 student, so don't worry guys, we have kept you covered as well. We are actually doing the series. Of course, we have started, we are in the process, we are actually doing the revision and all for class 11th. We do it on Wednesdays at 9 p.m. Okay, so you can mark your calendars every Wednesday at 9 p.m. if you are a class 11th student. So, yes, without wasting too much of time, let's quickly get into this. Let's quickly dive into macroeconomics and its basic concepts. Now, one thing that you need to know is that we are starting from very scratch. If you feel like, okay, macroeconomics, I know what the definition of macroeconomics is, but guys, mind you that when in the last session which we have covered, we have seen the CBSE sample paper, right, which CBSE has released for term 2, and there they have specifically mentioned ki, okay, 50 to 80 words ka answer hona chahiye, 80 to 120 words ke beech ka answer hona chahiye. So we can't just beat around the bushes. Our concept should be very strong, very clear, that we're able to actually answer the question in that particular given word limit, right? So yeah, if you haven't liked this video yet, give this video a big thumbs up. It actually motivates us to come up with many more videos. Subscribe to Pratham Test Prep's channel if you haven't subscribed already. Trust me, we go live, we come up with very informative videos for class 11, for class 12, and specifically for undergraduate entrances, be it form filling, be it anything, right? So yes, quickly get into that, and let's start with the very basic thing, that what is macroeconomics actually, right? So we all have heard that economics there are majorly two branches. One is macro and one is micro, right? But if I need to tell you about macroeconomics, right, it is that branch which deals with the economy as a whole, right? So if I take the word macroeconomics, right? So macro is what? Macro is an English word, which means what? Which means large. Okay. So the origin of this macro word has come from a Greek word which means macros, and this clearly means large. So in economics perspective, whenever we study about, in the context of economics, whenever we study about at a large level, that is what macroeconomics means, in which we study about the economy as a whole, right? Now, in microeconomics, you have studied about demand, you have studied about supply, you have studied about all these things, right? But in macro, there is a slight change, and here we study about like aggregate demand, we study about aggregate supply, right? These are the changes which we make in the macroeconomics, and we study about all these things in macroeconomics part, right? So macroeconomics is what? It is that branch of economics in which we deals with, or we see about the entire economy as a whole, right? We see the performance of the economy, we see the behavior of the economy, and we actually deals with the entire economy.
right? So it basically focuses on what? It basically focuses on the cumulative changes, which is also said as the aggregate changes of an economy, such as the growth rate, the employment, the inflation, the deflation, everything, right? So all these things wherein we study about economy as a whole, that is what? That is macroeconomics, right? So we know that in macroeconomics, we have national income and its aggregates. We have a lot of things. We have GDP, GNP, and whatnot. But in today's session, we will be first clearing out the basic concepts. Okay. So in GDP, GNP, there are a lot of things which you need to take into consideration, right? So before that, before getting into that, that we'll be covering in the next session. But before going into that, let me just tell you that what are the types of goods we have, right? So you have heard about public goods, you have heard about private goods. There is one such session in which we have covered this particular topic. So if you haven't watched it, or if you want to, revise your concepts, so in that case, what can be done? There is this playlist on Pratham Test Prep's channel under the name Economics Special, right? Therein you can have a look, and therein you can actually revise the concepts of public goods and private goods. But apart from that, we have some other types of goods about which we discuss in the macroeconomics part, right? So in macroeco, what type of goods do we have? We talk about intermediate goods. In macroeco, we talk about final goods, right? We talk about consumption goods. We talk about capital goods. So these are basically the type of goods about which we talk in macroeconomics, right? So you need to be very, very sure, because there was one such question which I remember in the CBSE sample paper which they have released, that they've asked a question about final goods and intermediate goods. So if you only write the final goods are like the final goods which are directly for the consumption, right? So agar aap keval yahi ek line likhoge, that would not make any sense. So you should be writing something extra in order to get that extra marks, in order to have that edge over your competitors. Good morning, Sadhya. Right? So you have to be very, very precise, and again making sure that we are not exceeding the word limit, right? So by this series, we are trying to give you as specific and as to the point thing as we can, so that you make a note of it if you're making notes, and then what you're doing, you are actually incorporating those notes, those topics in your answers, in your actual term 2 answers. Good morning, Ishika. Right, so this is the basic idea of this series, guys. Now be very, very sure that term 2 is not like your ऑब्जेक्टिव पेपर, राइट? कि आपको बस थोड़ा सा नॉलेज है और आपने क्या किया, आपने राइट आंसर टिक कर दिया. नो, आपको पूरा सब्जेक्टिव आंसर लिखना पड़ेगा, इन विच यू हैव टू हैव द clarity of the concept, right? So that's the reason why these economics classes are really, really important. Even if you're preparing for your entrances, you do not want to miss onto, or you do not want to get like lower marks in the boards too, right? We don't want that. So these things comes very handy. This series particular will come very, very handy, specifically for the economics student, because economics is once a subject. Even if you are a science student, you might have economics, right? I was a science student in class 12th, right? And I had PCM along with eco, right? And of course, English. So, even if you're a humanities student, you have economics. Even if you are a commerce student, you have economics as a major subject. So why not just take full utilization of these things, okay? Now we will take up these goods one by one, wherein we will be discussing all the related information, right? We'll be taking up what if boards में कुछ पूछ लिया, boards में उन्होंने किस चीज से related पूछ लिया, है ना? तो we should be very, very prepared for that, right? So we are taking these goods one by one. So let's start with intermediate goods. Intermediate goods क्या होते हैं? ये वो goods हैं basically जो आपके use होते हैं for the production of final goods and services. Now, Ishika, you tell me, if we are making bread, right? If we are making bread, right? So flour, in that case, flour would be a final good or an intermediate good? If the final outcome is bread, so flour is a final good or an intermediate good, right? It would be an intermediate good, because this is actually helping us produce the final goods and services, that is the bread, right?
So you need to be very, very sure that what kind of goods are the intermediate goods, what kind of goods are the final goods. Very good, Sadhya. So intermediate goods क्या होते हैं? अगर आपसे normal पूछा जाता है definition कि please define what is intermediate goods, what are intermediate goods with example. So this particular thing will be your answer. Okay, that these goods are referred to as those goods which are used for producing final goods and services. अगर आपसे ये पूछा जाता है कि intermediate goods have what kind of nature, are they finished goods, are they unfinished goods, अगर आपसे उनके nature के बारे में पूछा जाता है, in that case you can clearly say that intermediate goods, we can say that they are unfinished. Why? Because they are used, they will be used for the production of final goods, या फिर आप बोल सकते हो they are partly finished. Again, specific to the point. We do not want to exceed the word limit, right? Now, अगर आपसे पूछा जाता है कि intermediate goods का purpose क्या है, right? If they want to ask you, if they ask you the purpose, कि भाई what is the purpose of an intermediate goods? So you need to know that these goods are made for reselling by the firm or for generating प्रॉफिट, राइट? ये कुछ क्या है, इनका पर्पस क्या है कि भाई फर्म्स इनको रीसेल कर रही है प्रॉफिट जनरेट करने के लिए, राइट? अगर फ्लावर है, फ्लावर इज अ काइंड ऑफ इंटरमीडिएट गुड फॉर ब्रेड, लेकिन जो ब्रेड मेकर्स है वो क्या करेंगे, वो फ्लावर को कहीं ना कहीं से तो खरीदेंगे, तो फ्लावर वाले जो आपके सेलर्स है उनके लिए इट इज अ प्रॉफिट जनरेटिंग आइटम, राइट? उसके बाद अगर हम इंटरमीडिएट गुड्स के प्रोसेसिंग की बात करते हैं, दैट डू दे रिक्वायर फर्दर प्रोसेसिंग, राइट, और नॉट? So yes, intermediate goods, they require further processing. If we are saying that this is an intermediate good, of course we are processing it, of course we need to process it further to do what, to actually convert it or make a final good, right? So intermediate goods ka processing is required for final consumption. Okay, now if they ask you about the demand, please explain the demand for intermediate goods. What kind of demand do we have for intermediate goods, right? So in that case you need to know that intermediate goods का जो demand है वो basically based होता है on user के preference पे, right? It is based on users preference, as in अगर मुझे flour खरीदना है because I want to make chapatis at home, so in that case flour would be what, flour ka demand would be there because I want to have that flour for making chapatis, I don't want bread, right? So according to the demand of the consumer, according to the demand of user, according to user's preference, the demand of these intermediate goods are there, right? So you understand, agar last mein agar aapse pucha jata hai that are these intermediate goods included in national income, or what is what is the contribution of intermediate goods in national income? In that case you should know that intermediate goods जो है वो कोई भी impact नहीं डालते हैं national income पे, because we do not include intermediate goods on national income. So again you need to be very, very sure. अगर उन्होंने आपसे definition पूछी है, you can mark this. अगर उन्होंने आपसे उसका नेचर पूछा है, you can give this particular answer. If they have asked you the purpose, आप सीधा ये लिखो, get done and dusted with it. Do not waste too much of your time, right? अगर उन्होंने आपसे intermediate goods से processing से related कुछ पूछा है, use this fourth जो circle है, उसका जो answer है, use it, get done and dusted. We don't want to exceed the word limit, right? Because we already know कि हमारा शायद national income के जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं उसको करने में, उसको अटेम्प्ट करने में शायद मेरा टाइम जा सकता है. आई वुड नॉट वेस्ट माई टाइम टू मच इन द थियोरेटिकल पार्ट व्हेन दे हैव क्लियरली मेंशन्ड कि भाई 50 to 80 वर्ड्स का आंसर होना चाहिए, राइट? इफ दे हैव क्लियरली आस्क्ड यू अबाउट द डिमांड, व्हाट काइंड ऑफ डिमांड्स डू इंटरमीडिएट गुड्स हैव, you don't have to actually write the definition, the nature, the purpose, the processing, and then come on to demand. No, this will anyways increase the word limit. You will go above word limit, you would not have time later on, right? So you have to be very, very sure that demand पूछा है, stick to the point. And अगर national income का पूछा है तो आप सीधा लिख सकते हो that these goods, since they are unfinished goods, since these goods are used in the final processing, these goods do not create any impact in national income, hence they are not included. Very straight, very to the point. I hope it is clear to you. Likewise, yes,
Yes, Sadia, it is not considered. We have written, no, it is not considered in the national income. Very good. You're absolutely correct. Likewise, we will take all the types of goods. We will take capital goods, we will take final goods, we will take consumption goods. So that both में आपसे जो पूछा है आप उसका सीधा आंसर कर सको, right? If I talk to you about final goods, अगर मैं final goods की बात करती हूँ, final goods क्या है? For me, bread is a final good. राइट, ब्रेड इज अ फाइनल गुड. ब्रेड को फ्लावर यूज किया हमने बनाने के लिए, ईस्ट यूज किया, बहुत सारी चीजें यूज की, बट ब्रेड इज अ फाइनल गुड, राइट? बिकॉज व्हाई? इट इज डायरेक्टली कंज्यूम्ड बाय मी, इट इज डायरेक्टली कंज्यूम्ड बाय द consumer, right? So what are final goods? Again, if they ask you the definition, final goods are those goods जो manufacture करता है and it is directly consumed. Okay, now one more thing, guys, always make sure to support your answer with examples. This is a trick to gain more marks. Two tricks I'll give you. Number one, always support your answer with examples. Examples आप दोगे, बहुत बड़े आपका आंसर, it gives a very good impression. As a teacher, I am telling you that if you are giving examples, the teacher सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो जाता है कि अच्छा बच्चे को पता है तभी वो एग्जाम्पल दे पा रहा है, राइट? सो इफ यू हैव अटेंडेड माय the undergraduate entrances वाली classes too, you know that I strictly focus on the examples कि भाई examples जरूर कर लेना, right? Number two, always try to make flow charts, right? Always try to make flow charts wherever possible. ठीक है, अगर आपसे उन्होंने कुछ पूछा है, अगर फ्लो चार्ट बनाना पॉसिबल है, फॉर एग्जाम्पल अभी हम आगे वाले स्लाइड्स में पढ़ेंगे, जैसे आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, राइट? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी, ठीक है? तो अगर आपका ये है, उन्होंने नॉर्मल पूछा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, सो my point will be कि भाई if you are explaining circular flow of income, just give the paper checker the chart too. आपने थ्योरी में लिख रहे हो, 2 लाइन में लिख दो, बट चार्ट भी बनाओ, राइट? चार्ट जब आप बनाओगे उससे क्या होगा, आपका वर्ड लिमिट एक्सीड जो आपकी वजह चीज है ना, तो वो आप वहां से थोड़ा सा बच सकते हो. बिकॉज फ्लो चार्ट में टेल मी हाउ विल दे कंसिडर द वर्ड लिमिट, उसमें कैसे वर्ड लिमिट काउंट करेंगे, राइट? एंड इट गिव्स अ वेरी गुड इंप्रेशन. So if you can make flowcharts, always make sure to use flowcharts. Number one, to have an edge, to get extra marks over your competitors, and दूसरा, support your answers with examples. Because teacher क्या करता है बेटा, flowchart जैसी देखता है, so उनको पता चल जाता है कि okay बच्चे ने पढ़ा है, then only he or she is able to make that flowchart, right? So they don't actually look at the theoretical part much, right? And they can directly go into the flowchart and judge you on the basis of that, right? Now moving further to what kind of goods the final goods are. The final goods are finished goods, right? हमें पता है these are the finished goods. अगर आपसे दूसरा ऑप्शन, तीसरी जो चीज है आपको पता होनी चाहिए about final goods की final goods जो हैं वो क्या है, या तो वो यूज होंगे for capital formation, right? for formation of assets and capital, या फिर वो final goods यूज होंगे किस चीज के लिए, for the consumption purposes, like the example of this bread, right? Number 4 की अगर मैं बात करूं कि what kind of processing do final goods require? Do final goods require any kind of processing? My answer is straight up no. Final goods, they do not require any kind of processing and वो directly consume हो सकता है. So अगर मैं बात कर रही हूँ processing के बारे में, तो final goods का कोई processing नहीं चाहिए. We can directly consume the final goods. Now you guys tell me that अगर आपसे पूछा जाए that do final goods make an impact in national income, what will be your answer? क्या final goods national income पे impact करते हैं? The answer is absolutely yes. Final goods, they impact national income. Why? Because they are a part of national income. Very good, Sadia. They are a part of national income, so we consider them in our national income, right? And अगर मैं डिमांड की बात करती हूँ तो फाइनल गुड्स का कैसे डिमांड होता है, दे हैव अ डायरेक्ट डिमांड, ईदर दे हैव अ इनहेरेंट डिमांड, मतलब जो बंदा, अगर फॉर एग्जांपल इफ आई एम अ ब्रेड ईटर, राइट? अगर इफ आई एम समबडी जिसको ब्रेकफास्ट में ब्रेड्स ही चाहिए, सो आई एम, दिस इज एन इनहेरेंट डिमांड ऑफ माइन, राइट? सो आई विल टेक दैट. सो फाइनल गुड्स का या तो इनहेरेंट डिमांड होता है, मतलब जो फिक्स डिमांड होता है, या फिर उनका डायरेक्ट डिमांड होता है. सो दीज आर द you can say main pointers for final goods. Okay, now moving further to consumption goods.
अगर मैं आपसे कंजम्पशन गुड्स के बारे में बात करती हूँ, सो क्या है कंजम्पशन गुड्स? अब आपको हमेशा आप कंफ्यूज हो सकते हो बिटवीन कंजम्पशन गुड्स, राइट, कंजम्पशन एंड कैपिटल गुड्स। इन दोनों के बीच में यू कैन गेट कंफ्यूज, कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। व्हाट आर कंजम्पशन गुड्स? कंजम्पशन गुड्स वो गुड्स होते हैं जो आपके यूज किए जाते हैं कंज्यूमर्स से, कंजम्पशन कंज्यूमर, राइट, एंड हैव नो यूज इन फ्यूचर। मतलब इन गुड्स का आपने एक बार खाया और उसके बाद उसका कोई यूज नहीं है फ्यूचर में, दीज आर कंजम्पशन गुड्स, राइट। क्यों आपके कंजम्पशन गुड्स लोग खरीदते हैं? दीज गुड्स आर कंज्यूम्ड सो दैट जो पर्सनल नीड्स है, पर्सनल कंजम्पशन नीड्स है, उनको फुलफिल किया जा सके, राइट। अगर मैं आपको इनका टारगेट ऑडियंस बताऊं या फिर इनका मार्केट बताऊं कि कंजम्पशन गुड्स का टारगेट क्या होता है, मार्केट क्या होता है, सो कंज्यूमर इसका टारगेट है, कंज्यूमर इसका मार्केट है। व्हाट काइंड ऑफ मार्केट डू कंजम्पशन गुड्स होल्ड? Consumers are the actually target or the market of consumption goods are consumers, right? आप consumer goods, आप consumption goods को देखना, they are relatively cheaper. Relatively cheaper, comparatively cheaper than what? Comparatively cheaper than capital goods. इसका एक रीजन ये भी हो सकता है, क्यों? Because they have no use in future, they are like one time use. Okay, so they're relatively cheaper than capital goods. And finally, जो आपके consumption goods है, अगर मैं demand perspective से आपको बताऊं, they have a very high demand. Why? Because भाई consumer अपनी personal needs को fulfill कर रहे हैं, right? So this is consumption goods. Likewise, if I take you to capital goods, अगर अब मैं आपको capital goods की बात बताती हूँ, what are capital goods? Capital goods वो goods होते हैं जो आपके consumption goods को बनाने के, consumption goods का production करने के लिए use होते हैं, right? Capital goods क्या होते हैं? I'm repeating it again. These are those goods which are used for producing a consumption good, मतलब जिनका कोई future use होता है. Do not get confused. आपको क्या लगा कि भाई एक फाइनल गुड्स है, एक इंटरमीडिएट गुड्स है, दो लाइनें ही तो है इनके बारे में, बट नहीं, हमने पूरी दो स्लाइड्स देखी, राइट। नाउ यू माइट थिंक कि कंजम्पशन गुड्स है, फाइनल गुड्स है, बस उनके नाम के इधर उधर ही तो खेल रहे हैं। नो, वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स, वी हैव अ लॉट ऑफ पॉइंटर्स टू कवर इन दिस पर्टिकुलर थिंग टू। यस, वेरी गुड सादिया, लाइक मशीन्स, ठीक है। क्या एग्जाम्पल हो सकता है इनका? एग्जाम्पल है मशीन्स, tools and implements, right? These are what? These are the consumption, these are the capital goods, ठीक है। अब हमारा जो सेकेंड पॉइंट है, ऑफ कोर्स इनको परचेज क्यों किया जाता है? इन कैपिटल गुड्स को परचेज किया जाता है सो दैट हमारी जो कंजम्पशन गुड्स हैं, जिनको कंज्यूमर डायरेक्टली कंज्यूम करता है, उनको क्या कर सके, उनका मैन्युफैक्चरिंग हो सके, इसीलिए कंजम्पशन गुड्स, कैपिटल गुड्स आपके खरीदे जाते हैं, राइट। नाउ बहुत इजी सा क्वेश्चन है कि इनका मार्केट क्या होगा, इनका टारगेट क्या होगा? इनका टारगेट या मार्केट कौन होगा? कंज्यूमर्स तो होंगे नहीं, बिकॉज कंज्यूमर्स थोड़ी ना बना रहे हैं चीजें। टारगेट क्या होगा? टारगेट होगा मैन्युफैक्चरर। व्हाई? बिकॉज मैन्युफैक्चरर विल एक्चुअली बाय अ मशीन, उसके बाद यूज करके कोई ना कोई कंजम्पशन गुड्स बनेंगे, राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका? दैट कंजम्पशन गुड्स, जो आपके कैपिटल गुड्स है, उनका क्या है? कैपिटल गुड्स का आपका डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, बहुत ज्यादा लो होता है डिमांड्स ऑफ कैपिटल गुड्स। कंजम्पशन गुड्स का डिमांड बहुत ज्यादा हाई होता है, लेकिन कैपिटल गुड्स का डिमांड बहुत ज्यादा लो होता है। व्हाई? बिकॉज वो एक बार ही तो वो यूज हो, ऐसा तो है नहीं कि आप डेली मशीनरी खरीद रहे हो, डेली आप कोई चीज खरीद रहे हो, राइट। अब आप ब्रेड डेली खरीद सकते हो, लेकिन आप डेली मशीनरी तो नहीं खरीदोगे ना। सो दैट इज व्हाट कैपिटल गुड्स का डिमांड इज रिलेटिवली लो। एंड इफ आई टेल यू अबाउट द प्राइस पॉइंट, अगर मैं प्राइस की बात करती हूँ, तो उस केस में क्या है आपका? जो कैपिटल गुड्स हैं, दे आर रिलेटिवली कॉस्टलियर, राइट। व्हाई? बिकॉज दे आर फॉर लॉन्ग टर्म। कैपिटल गुड्स क्या है? दीज आर फॉर लॉन्ग टर्म। सो दैट इज व्हाट अबाउट कैपिटल गुड्स दैट यू नीड टू नो, राइट। उसके बाद वी हैव समथिंग कॉल्ड स्टॉक एंड फ्लो। अगर मैं स्टॉक एंड फ्लो की बात करूं, ऑल्दो ये आपका, आई थिंक हमने टर्म 1 का जो प्रिपरेशन करी थी, उसमें भी आई हैव टोल्ड यू दिस थिंग, व्हाट आर स्टॉक्स, व्हाट आर फ्लोज, बट अगेन आई एम टेकिंग अप दिस टॉपिक, राइट, बिकॉज राइट नाउ दिस इज गिवन इन द CBSE सिलेबस। ओके, व्हाट इज अ स्टॉक? स्टॉक का मतलब क्या होता है? हमारे पास इतना स्टॉक है,
right? It is measured at a point in time, right? वो एक ऐसा वेरिएबल है which is measured at a point in time. लेकिन फ्लो क्या है? फ्लो मतलब फ्लो हो रहा है, राइट? फ्लो मतलब क्या है? लाइक अ रिवर फ्लोज, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर रिवर फ्लो हो रही है, राइट? सो उस तरीके से आप याद रखोगे, इट इज दैट वेरिएबल which is measurable over a period of time, right? Again, I'm repeating it. What is stock, which is measured at a particular point of time? एक ही point of time पे जो measurable है. What is flow? Like river flows एक point से दूसरे point तक. Likewise, which is measurable, any variable which is measurable over a period of time. मतलब कुछ time के लिए जो measurable है, that is what? That is flow, right? Now, moving further to stock का जो दूसरी चीज है वो क्या है? It does not have a time duration or it does not have a time dimension attached to it. अब obvious सी बात है कि अगर आपका स्टॉक है, अगर आपके स्टॉक की बात हो रही है, तो स्टॉक का क्या होगा? एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात है ना, दैट इज द पॉइंट ऑफ, दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली वन पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. तो उसमें कोई टाइम डायमेंशन तो होगा नहीं, उसमें हम 1 वीक 2 वीक्स ऐसे तो कुछ ले नहीं सकते. लेकिन when we say flow which is measurable over a period of time, it has what? It has a time dimension attached with it, right? It has a time dimension, एक time है जो attached है उसके साथ, right? Stock क्या है? Stock आपका, I would say it is static in nature because it is a stock. Flow क्या है? बह रहा है. It is like flowing, so it has a dynamic nature, right? Every day नया नया चीज है. For example, if I tell you about current affairs are not static, those are dynamic, right? So it has dynamic nature. अब स्टॉक जो है, एक और इंपॉर्टेंट चीज है, स्टॉक इन्फ्लुएंस करेगा फ्लो को और फ्लो इन्फ्लुएंस करेगा स्टॉक को, राइट? ये आपको पता होना चाहिए दैट स्टॉक इट इन्फ्लुएंस फ्लो. क्यों भाई? अगर ज्यादा अमाउंट का कैपिटल होगा तो ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो होंगे. अगर ज्यादा मनी सप्लाई का आपका फ्लो होगा, उससे क्या होगा? इकोनॉमी में जो क्वांटिटी ऑफ मनी है वो बढ़ेगा. सो व्हाट हैपेंस? स्टॉक इन्फ्लुएंस फ्लो, फ्लो इन्फ्लुएंस स्टॉक. सिंपल, राइट? इफ आई टेल यू अबाउट द एग्जाम्पल्स, तो एग्जाम्पल क्या है? कैपिटल, बैंक डिपॉजिट, वेल्थ, पॉपुलेशन, ये सब आपका स्टॉक है, राइट? बट अगर मैं फ्लो की बात करूं तो इनकम फ्लो होती है, डेप्रिसिएशन होता है, कैपिटल फॉर्मेशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सारी चीजें आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फ्लो, राइट? हाँ जी, मनी सप्लाई इज अ फ्लो कंसेप्ट, बट मनी जो है दैट इज स्टॉक. ठीक है? वेल्थ जो है दैट इज स्टॉक, बट उसका जो सप्लाई है, बिकॉज वो तो सप्लाई हो रहा है ना फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर साथ, सो दैट इज फ्लो. ठीक है? बिकॉज वी कैन मेजर इट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि कितना मनी जो है वो आपका फ्लो हुआ. Now moving further to gross investment and net investment, ये एक आपका next topic है which is given. Gross investment क्या है? It is the total expenditure done for buying capital or adding capital stock over a period of time. जितना भी आपका expenditure हो रहा है capital goods लेने में, राइट? कैपिटल स्टॉक बनाने में, मशीनरीज, टूल्स, इम्प्लीमेंट्स, अगर आप उसका डेप्रिसिएशन उसमें इंक्लूड नहीं कर रहे हो तो वो आपका क्या है? वो आपका है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट. व्हाट इज डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन इज द रेगुलर वेयर एंड टेयर आउट, राइट? रेगुलर वेयर एंड टेयर आउट जो होता है वो क्या होता है? दैट इज डेप्रिसिएशन. ठीक है? आपका नेट इन्वेस्टमेंट क्या हुआ? नेट इन्वेस्टमेंट हुआ आपका एक्चुअल एक्सपेंडिचर जिसमें आप डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट भी कैलकुलेट करते हो, दैट इज नेट इन्वेस्टमेंट. ठीक है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या हुआ? सिंपल, आपने कितना एक्सपेंडिचर किया कैपिटल गुड्स खरीदने में, वो क्या है आपका? आपका है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, राइट? लेकिन नेट इन्वेस्टमेंट क्या है? नेट इन्वेस्टमेंट आपका है जब आप ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन को माइनस करते हो, वो आपका है नेट इन्वेस्टमेंट. उस तरीके से वी कैन कैलकुलेट नेट इन्वेस्टमेंट. वेरी गुड साथ्या. दूसरा क्या है आपका? थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंटर कि हम डेप्रिसिएशन को कंसिडर नहीं करते ग्रॉस में फॉर कैलकुलेटिंग फाइनल गुड्स, लेकिन नेट में हम डेप्रिसिएशन को कंसिडर करते हैं बिकॉज व्हाट? दिस इज द एक्चुअल एक्सपेंडिचर, राइट? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हमें क्या आइडिया देता है? इट एक्चुअली गिव्स अस द आइडिया कि भाई हमारा कैपिटल गुड्स पे टोटल कितना मनी स्पेंड हुआ. डेप्रिसिएशन वगैरह छोड़ो, बट हमारा कैपिटल गुड्स पे कितना मनी स्पेंड हुआ, दैट इज व्हाट ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज. लेकिन इफ आई टेल यू अबाउट नेट इन्वेस्टमेंट, तो नेट इन्वेस्टमेंट आपको एक्चुअली आइडिया देता है कि भाई कैपिटल गुड्स तो है ही, राइट? कितना बना, लेकिन उसके साथ साथ आपका डेप्रिसिएशन कितना हुआ, रेगुलर वेयर एंड टियर कितना हुआ. उससे क्या होगा? आपके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी मशीनरी, किसी भी टूल की एफिशिएंसी हम इंप्रूव कर सकते हैं, राइट? सो दिस इज व्हाट ग्रॉस एंड नेट इन्वेस्टमेंट इज. नाउ फाइनली
the last topic for the day is circular flow of income. And आपके जो CBSE ने syllabus भेजा है उसमें we have a two sector model, circular flow of income in a two sector model. Now what is circular flow of income? जानने से पहले I'm telling you two sector model. ये two sector model क्या है? Majorly in this two sector model we take two entities. We take households and we take firms, right? Households क्या हो गए आपके consumers हो गए, firms क्या हो गए आपके manufacturers या producers हो गए. हम ये मान के चलते हैं कि इकोनॉमी में केवल एक households है और केवल firms है. Households अपना डिमांड कर रहे हैं goods and services का, ठीक है, उसके बदले में वो पैसे दे रहे हैं उनको, और firms जो हैं वो goods and services produce कर रहे हैं households और उसके बदले में उनसे पैसे ले रहे हैं. Very very simple, right? Now हमें पता है that there are four factors of production: land, labor, capital, and entrepreneur. Right? These are the four factors of production. Land से क्या मिला? Land से कैसा पेमेंट मिलता है? Rent. Labor को wages देने पड़ते हैं, right? Capital का interest होता है and entrepreneur का profit होता है. Right? These are the four factors of production जो हमारे यूज होते हैं. Now circular flow of income क्या होता है? Circular flow of income मतलब अगर हम टू सेक्टर मॉडल में बात करें तो फर्म से हाउसहोल्ड पे क्या जा रहा है, हाउसहोल्ड से फर्म पे क्या जा रहा है, वाइस वर्सा, राइट? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होता है इन अ व्हाट, इन अ सर्कुलर मैनर, ठीक है. नाउ टू सेक्टर मॉडल में क्या होता है, आपका फ्लो ऑफ पेमेंट होता है, फ्लो ऑफ सर्विसेज होता है. हाउस होल्ड को क्या चाहिए भाई, हाउस होल्ड को सर्विसेज चाहिए. आई नीड सर्विसेज, राइट? तो हमें सर्विसेज लेंगे, बट सर्विसेज क्या हमें फ्री में मिलेंगी? नहीं, उसके लिए हमें फैक्टर पेमेंट करनी पड़ेगी, राइट? तो अगर लेबर है तो उसको हमें वेजेस देने पड़ेंगे. तो ऐसी चीजें हैं, राइट? सो जब ये दो आपके उसमें होता है, दो एंटिटीज में होता है बिटवीन द हाउसहोल्ड एंड द फर्म्स, इन दैट केस वी कंसीडर इट एज व्हाट, वी कंसीडर इट एज अ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ टू सेक्टर मॉडल. आप इधर से देखो, हाउसहोल्ड ने फैक्टर सर्विसेज दी, राइट? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, और बदले में क्या था, फैक्टर पेमेंट्स में, राइट? इधर क्या थे, गुड्स एंड सर्विसेज का हुआ, एंड बदले में क्या हुआ, कंजम्पशन का एक्सपेंडिचर हुआ ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है. अब आपको सिर्फ एक चीज जाननी है कि जो आपके अंदर वाला जो सर्कल है, मतलब ये दोनों वाले, ये हैं आपके रियल फ्लोज. बेसिकली क्या हो रहा है, इसमें आपका सर्विसेज एक्सचेंज हो रही हैं, लेकिन जो आपके आउटर सर्कल्स हैं, मनी तो इसमें एक्सचेंज हो रहा है ना. सो बेसिकली आउटर सर्कल आपका बात करता है मनी फ्लोज के बारे में, बिकॉज पेमेंट्स एक्चुअली यहाँ पर हो रही है, right? So this is all about the circular flow of income. Now we have ended this topic. We have ended macroeconomics and its basic concepts. Thank you so much guys for staying tuned. We shall be meeting super soon next Saturday at 10:30 a.m. Till then, take care. Bye-bye. Stay safe. Keep revising. And yes, if you like this video, give this a good thumbs up. This motivates us. And yeah, subscribe to Pratham Test Prep's channel if you haven't subscribed already. All right. Thank you so much, guys. Bye-bye. Stay tuned. Hoping to see you next time.